happy. So today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 8 English grammar, that is punctuation and capital letters. So let's begin with this lesson. The word punctuation has been derived from the Latin word punctum, which means a point or stop. क्या मतलब होता है punctum का? Like एक point या फिर एक stop. So a punctuation mark divides a sentence or a paragraph in a clear and understandable language. ये क्या करते हैं punctuation mark? आपके sentence और paragraph को एक clear और understandable language में divide कर देते हैं. Now the following are the principal punctuation marks. ये क्या mark है? First one is full stop, second is comma, third is semicolon, fourth is colon, fifth is quotation mark, sixth one is question mark, and seventh one is exclamation mark. So full stop हम कहाँ use करते हैं? It is used at the declarative and imperative sentence. Declarative और imperative sentences में use होता है he is an honest student. So after certain abbreviations के साथ use होता है. हमने यहाँ पे declarative sentence में और imperative sentence में use कर लिया end में. So ये हमने clear कर दिया कि वो क्या honest student है. तो full stop हमने यहाँ पे use कर दिया. Now after certain abbreviations or initials like A, M, MP, क्या जो एक word complete होने के बाद लगाते हैं abbreviations के साथ ये initials like P, M, USA, MS धोनी, CV रमन. Now comma कहाँ लगाते हैं? It is वो क्या है हमारा comma, हमारा shortest pause के लिए हम comma को use करते हैं for separating a series of words in a same construction. Series of words को divide करने के लिए same construction में like please keep a pen, a pencil, an eraser, a scale in your bag. So after a nominative absolute like it being Sunday, I am going to stay indoors. To mark off a noun or phrase in a position, mark off करने के लिए noun या phrase का positions में like my son Piyush was a very good runner in his childhood. To separate the subordinate adverb clause from the rest of the sentence. Like if you have the reference book, please explain me the to mark off direct quotation. Direct quotations के लिए from the rest of the sentence में use करते हैं like give me blood, I will give you freedom, comma thundered नेताजी. किसने बोला ये? नेताजी ने बोला. So semicolon का use करते हैं indicate a greater pause. ये comma से ज़्यादा pause दिखाता है in comparison to comma. It is used for separating the clause of a compound sentence. Separate करने के लिए clause को compound sentence के use होता है when they have a comma. For example, Dr. Manmohan Singh is renowned economist. ये क्या है? Renowned economist है, visionary and is respected all over the world. Separating a series of loosely related clause. Loosely related clause को separate करने के लिए series को his heart was big, his pockets empty. So colons के साथ use होता है. The colon denotes even a greater pause than that indicated by semicolon. ये क्या है? डिनोट करता है greater pause, जैसे semicolon indicate करता है. वो किसमें यूज होता है? To mark a direct quotation. Direct quotation को मार्क करने के लिए यूज होता है. Like my teacher said honesty is the best policy. Direct quotation है ये. Before enumerations के लिए यूज होता है like colons. A kind of noun are proper, common and abstract. ये क्या है हमारा? हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? Colon यूज कर दिया. Now quotation marks. Quotation marks are used to mark the actual words of the speaker. Direct speech के लिए हम use करते हैं quotation marks actual words के लिए. Like Ram said, I'm going to the market. Ram said, comma, then quotation mark, I'm going to the market. Now question mark. It is used to at the end of direct question. Direct question के end में use होता है where are you going? Exclamation mark. Exclamation mark is used after interjections and phrases or sentences expressing emotion or wish. Interjection और phrases के बाद sentence जो express कर रहे होते हैं हमारे emotion या फिर wish. Like alas, oh dear, long live the queen, what a sweet mango it is, how terrible. हमने यहाँ पे क्या use कर दिया? Exclamation marks use कर दिए जो क्या है हमारे interjections या phrases है उनके लिए. Now capital letter. Capital letter are used with particular type of noun. एक particular type of noun, certain position in a sentence, and with some adjectives के साथ हमारे capital letters use होते हैं. Like usage of capital letter. Rule 1 is over here. Like to start a sentence, हम क्या use करते हैं? There is no exception to this rule. Sentence start होगा capital letter से start होता है. This means that after a full stop, you always use a capital letter. Full stop के बाद आप हमेशा capital letter use करते हो. If the previous sentence ends with question mark,
और exclamation mark you should always use a capital letter. आपको हमेशा capital letter यूज करना है. And I like full stops indicate end of sentence. जो full stop होता है क्या indicate करता है? And sentence का end indicate करता है. तो उसके बाद क्या हम यूज करते हैं? However in the sentence you have a clause in parenthesis bracket, जैसे कि मतलब parenthesis मतलब bracket में और a sequence separated by dashes, and if these ends with a question mark, अगर वो question mark से end करे या फिर exclamation mark के, you should continue with lowercase after the second bracket or dash. Now titles. In titles capitalize only the important words. आपको खाली important words को capitalize करना है, not minor words such as and but. Now title case with all the important words capitalized, सारे words जो capitalized होते हैं उसके साथ, is rather out of fashion at the moment. Most academic journals and standard operating systems, for instance, prefer what is known as sentence case. वो क्या refer करते हैं कि जिसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, sentence case कहते हैं, with a single initial mark, जिसमें क्या होता है, single initial mark होता है. However, it's good to understand the rules in case you are required to use the case at any point. आपको rules समझने चाहिए, आपको कहीं भी किसी point पर requirement होती है उसकी. Use the title of this article for an example, like sentence case when to use capital letters, title case when to use capital letters. Now in the हमारा sentence case था, title case भी था. Now in title case in this example use although small, use क्या है हमारा, इसमें क्या है, small है, and is an important word in the title. Title में क्या है, वो important word है, इसलिए हमने capital कर दिया. और किस सेंटेंस में क्या वो इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, इसलिए उसे हमने कैपिटलाइज नहीं करा. और दो टाइटल में क्या हमारा टू भी क्या है, टू हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, देखो नॉट कैपिटलाइज, इसलिए उसे हमने यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं करा. नाउ रूल 3 फॉर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन नेम समथिंग स्पेसिफिक. ये समथिंग स्पेसिफिक को नाउन होते हैं जो हमारे वो भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट हो, लाइक जेन, जॉन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट, एवरेस्ट, सहारा. ये क्या है, हमारे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं प्रॉपर नाउन्स हमारे. Proper noun nearly always starts with a capital letter. There are exceptions to this rule and marketing. Sometimes lowercase characters are purposefully used for some pronoun nouns. Some proper noun. Lowercase characters भी use होते हैं कुछ proper nouns के लिए. Like examples include iPhone, eBay, one word, alliance. So, however, in most cases, proper noun starts with capital letter. हमारा proper noun किसके साथ start होता है? Capital letters के साथ start होता है. For example, I went to the University of Delhi today. I went to Delhi today and I looked at the university. So हमारी किससे start हो रहा है, ये capital letter से ही start होते हैं. Capitalized is correct in both the sentence. दोनों sentence में correct होता है. Like in the first sentence, the proper noun University of Delhi is used. First sentence में क्या use है, proper noun क्या है हमारी, University of Delhi use हुआ है. Now in the second sentence, the more general noun, जो ज़्यादा general noun है, used, so it is not capitalized. इसलिए वो क्या नहीं है, capitalized नहीं है. Now the word I is not a proper noun. जो आपका word I है वो क्या है, आपका proper noun नहीं है, वो क्या है, आपका pronoun है. In English, I always capitalized. In many other language, I बहुत सारी capital language, बहुत सारी other languages में capitalize होता है. The equivalent word is not capitalized. उसके equal का word जो होता है वो capitalize नहीं होता. Rule 4, acronyms. Acronym generally work like the title case. किसकी तरह वर्क करते हैं, टाइटल केस की तरह वर्क करते हैं. You capitalize the important words. आप important words को capitalize कर देते हो, and not, and, of, for, and so on. Not को, and को, of को, sorry, no, and, of और for को so on नहीं करते. So the easiest way to work this out to write out the full title, and then you can see which word don't need to be capitalized. आप फुल टाइटल लिख लो, फिर उसमें देखो कि कौन से वर्ड को कैपिटलाइज करने की नीड नहीं है. To make this clear, here are some examples. Department for Education, that is DFP. Boards of Control for Cricket, that is BCCI. Ministry of Transport, और आपका O क्या है, important नहीं है तो आप कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. MOT test. Head of Department HOD. World Health Organization WHO. ये सारे कैपिटलाइज है. Now rule 5. Contractions. For contractions, capitalize the initial letters of word. Contraction मतलब छोटा करने के लिए initial words को capitalize करना है आपको, initial letters को.
but not subsequent letter within the same word. Contractions are like acronyms. किसकी तरह? Acronyms की तरह है, but also include one or more letters. दो और more letters को include करते हैं from within the same word. Examples of this is hi-fi, which is short high-fidedly. Hi-fi का short क्या होता है? High-fidelity होता है. And sci-fi short is sky is science for fiction. Short for science fiction. Now the word to deal with these is to write out the phrase and have a look. आपको एक phrase लिखना है, उसमें look करना है. Like although the word that are abbreviated may not be capitalized. जो word आपके abbreviated है उन्हें capitalize करने की जरूरत नहीं है. Like as in science fiction, the abbreviation always contains same capital for the start of each new word. मतलब capital क्या होता है? जो new word start हो रहा है उसका एक first word capital होता है. So to make the word boundaries and pronunciation clear, उसके लिए use करते हैं capital word. We frequently use skills you need contracting the spaces but making the phrases easier to read. Contract करने के लिए spaces को use करते हैं, phrases को easier करने के लिए reading में use करते हैं हम. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.